चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वाचप्राणचमुखादजायत ओम। बोले कृष्ण कन्हैया लाल को, सतगुरु महाराज को जय हो। धनी कोटि कोटि दंडोत करूं, कोटि कोटि करूं प्रणाम, कोटान कोट विनती करूं, धनी मेरे सुंदर वर श्यामा जी वर श्याम, भय नेरे नौ खंडो आरती। श्री विजयाभिनंद बुद्ध जी की आरती, प्रेम मग्न हुए उतारती, सखी आप पिया परवारती, भई नेरी नौ खंडो आरती। दुष्टाई सबों की संघारती, सुख अखंड आनंद विस्तारती, जन सचराचर तारती, भई नेरी नौ खंडो आरती। सैया सब श्रृंगार साजती, मैंने सूरत पिया जी की विराजती, ए शोभा इतय छाजती, भई नेरी नौ खंडो आरती। झालर अगणित बाजेले बाजती, ब्रह्मांड में नौवत गाजती, कलियुग सेना सुन भाजती, भई नेरी नौ खंडो आरती। सप्तधात शून्य मंडल थाल, निरंजन ज्योत भय उजाल, झल हलिया इत नूर जमाल, भई नेरी नौ खंडो आरती। पसरी दया प्रगटे दयाल, काटे दुनि के कर्म जाल, चैतन्य व्यापी भय निहाल, भई नेरी नौ खंडो आरती। आए सेना सहित त्रिपुरार, आए ब्रह्मा जी पढ़त मुख वेद चार, विष्णु वाणी बोलत जय जयकार, भई नेरी नौ खंडो आरती। आए धर्मराज और इंद्र वरुण, नारद मुनि गुण गंधर्व 14 भुवन, सुर असुरों सब लय शरण, भई नेरी नौ खंडो आरती। आए सनकादिक चारों थंब, लिए खड़े संग विष्णु ब्रह्मांड, जो ब्रह्म अनुभवी हुए अखंड, भई नेरी नौ खंडो आरती। जिन हद कर दे नौदा भगत, जुदी कर गाई पाई प्रेम जुगत, यों आए शुक व्यास बड़ी मत, भई नेरी नौ खंडो आरती। आए नवनाथ 84 सिद्ध, बरस्या नूर शकल या विध, इताए बुद्ध जी ऐसी किध, भई नेरी नौ खंडो आरती। आए चारों संप्रदाय के साधु जन, चार आश्रम और चार वर्ण, चारों खुटों के आए गावते गुण, भई नेरी नौ खंडो आरती। आए गच्छ 84 जो अरहंती, दत्त जी दशनामी जो महंती, आए कर्म उपासनी वेदांती, भई नेरी नौ खंडो आरती। आए षट दर्शनी षट शास्त्र वेदी, 72 फिरके आए अथर्व वेदी, आए सकल कैदी और बेकैदी, भई नेरी नौ खंडो आरती। श्री बुद्ध जी की ज्योतें कियो प्रकाश, त्रैलोकी को तिमिर को कियो नाश, लीला खेले अखंड जाग निराश विलास, भई नेरी नौ खंडो आरती। पिया जी हुक्म गावे श्री महमत, उड़ायो असत थाप्यो सत, सब पर कलश हुआ आखरत, भई नेरी नौ खंडो आरती। पिया जी हुक्म गावे श्री महमत, उड़ायो असत थाप्यो सत, सब पर कलश हुआ आखरत, भई नेरी नौ खंडो आरती। स्वरूप सुंदर शनकुल सकोमल, रुआ देख नैना खोल नूर जमाल, फेर फेर महबूब आवत हृदय, किया किन तेरा कौल फैल ए हाल। जामा जड़ाव जुड़ियो अंग जुगते, चार हारो अंबर करे झलकार, जगमगे पाग जोत जबिर ज्यों, मीठे मुख नैनो पर जाऊं बलिहार,
लाल धुर हसत मुख हरवटे नासिका तिलक नीलवट भुए केश श्रवण भूषण मुख दंत मीठी रसना ए दिख दर्शन आवे जोश आविस बाहें चुड़ी बाजू बंद श्वेप मुख पहुंची कांडो कड़ी हस्त कमल मुदरी नख का नूर चीर चढ़िया आसमान में ज्यों हक चलवन करी सबंगुरी रोशनी पटुके करी अवकाश में चरण भूषण जामे जार झाई कई श्री महमती मोमिन रुह दिल को माँ सुख खेचे त्वे अरस के माही रोशनी पटुकी करी अवकाश में चरण भूषण जामे जार झाई कई श्री महमती मोमिन रुह दिल को माँ सुख खेचे त्वे अरस के माहे बुला लीजिए त्वे अरस परम धाम श्री मूल मिलावे की माही आनंद मंगल श्री धाम धनी जीव के जय श्री जुगल किशोर की जय श्री वृंदावन चंद्र जीव की जय श्री रास की रमैया की जय श्री हुकुम के स्वरूप की जय धनी श्री देवचंद्र जीव की जय श्री जियावर जी साहेब जीव की जय श्री बाईजुराज जीव की जय श्री महाराजा छत्रसाल जीव की जय श्री सुंदर साज जीव की जय श्री सुंदर साज जियावर जी साहेब जी के चरणार बिंद में हित सो चित दे जियो इन चरणों में बेर बेर लागिए प्रणाम सागर जो मेहर का सो शोभाति लेत और सागर जो मेहर का सो शोभाति लेत लहरावे मेहर सागर खूबी सुख समेत और सागर जो मेहर का सो शोभाति लेत लहरावे मेहर सागर खूबी सुख समेत हुक्म मेहर के हाथ में जोश मेहर के अंग इसक आवे मेहर से बेसक इलम तिन संग पूरी मेहर जित हाक की तित और कहाँ चाहिए हक मेहर तित होत है जित असल है निस्बत मेहर होत अपल से इतई होत हुकुम जलूस सत सब तीन के कछु कमी न करत खसम एक खेल हुआ मेहर वास्ते मैं खेलाई सब मेहर जाते मेहर जो दी हुई तब होत सब जहर दो मेरे देखत खेल में लोग देखे ऊपर का जहूर जाए अंदर मेहर कछु नहीं आखर होता हक से दूर मेहर सोई जो बातुनी जो मेहर बाहर और माहे आखर लग तरफ धन की कमी कछुए आवत नाए मेहर होत जिना पर मेर देखत पांचों तत्व पिंड ब्रह्मांड सब मेहर के बीच बसत दुख रूपी न जीव में दुख ना काहू दिखात बात बड़ी है मेहर की जो दुख में सुख लेवात सुख में तो सुखदाई पर स्वाद नावत पर दुख आए सुख आवत सो मेहर खुलत नजर इन दुख रूपी इन जीम में इन दुख की जिम में बैठ के मेहर दिखे दुख दूर कायम सुख जो हक के सो मेहर करत हजूर मैं देखा दिल विचार के इशक हक का जीता इशक मेहर से आया अबल मेहर तीत अपना इलम जिन देते है सो भी मेहर से बिसाक मेहर सब विदयावत जित हुक्म जोश में रहा
जाको लेते मेहर में ताए पिल मेरा बना बेवजूद गुनांग इंद्री मेहर की रूह मेहर फुकत महबूद मेहर सिंहासन बैठक और मेहर चवर चिर छात्र सोवत से न्या मेहर की दिल चाहे मेहर वजंत्र बोली बुलावे मेहर की और मेहर का चलाना रात दिन दो मेहर में हुए मेहर मिला वरुआना बंदगी जी कर मेहर की ए मेहर हक हुकुम रूही बैठ मेहर छाया मिने पिए मेरा रसई सकई नाम जीत मेहर तित सब है मेहर अब्बल लग आखारा सोवत मेहर दे वही कहूँ मेहर सिफत क्यों कर यह जो दरिया मेहर का बातों न जाहिर दिखाता सब सुख देखता तहाँ मेहर जीत बसात बीच ना भूत दुनिया के आई मेरा हक खिलवत इनसे सब कायम हुए मेहर की बरकत वर्णन कर क्यों मेहर की शिफत ना पहुँचात हे मेहर हक के बातुनी नजर माहे बसात हे मेहर करत सब जाहिर सब कामता तोलात जो किन कानो ना सुनिया सो मेहर मगज खुलात वर्णन कर क्यों मेहर की जो बसत हक के दिल जाको दिल में लेते है तहाँ आवत न्यामत सब मील वर्णन कर क्यों मेहर की जो बसत है माहे हक जाको निवाजे मेहर में ताए देता आप मखफक बात बड़ी है मेहर की जित मेहर तित सब निमख न छोड़े नजर से इन ऊपर कहाँ कहूँ अब जहाँ अप तहाँ नजर जहाँ नजर तहाँ मेहर मेहर बिना और जो कछु सब सब लगे जेर बात बड़े है मेहर की मेहर होए ना बिना अंकुर सोए हक निसवती माहे वसत तजल्ला नूर जो मेहर त्यो जो सहे जो सत्यो हुकुम मेहर रहत नूर बल लिए तहाँ कैलाम मीठा सुख में सागर मेहर में हक आराम मेहर ही सक हक आंग है मेहर ही सक प्रेम काम काम बड़े इन मेहर के ए मेहर इन हक मेहर होत जिनो पर ताए देता आप मफक मेहर खेल बनाइया वास्ते मेहर मुमीन मेहर मिला हुआ और मेहर फिरस्तान मेहर रसूल होए आया मेरा हक लिए फुरमान कुंजी ल्याए मेहर की कर मेरा हक पहचान दई मेहरे कुंजी माम को तीनों मोहम्मद सुरात मेहर दई हिकमत कर मेहर जाहिर हकीकत सो फुरमान मेहर खोलिया कर जाहिर मेहरा खरत मेहर समझे मोमिनो कर मेहर जाहिर खिलवत ए मेहर मोमिनो पर यही खासल खास उमत दई मेहरे विस्त सवन को सो मेहर मोमिनो बरकत मेहर खेल दिख्या मोमिनो मेहर आए तले कदम मेहर कयामत करके मेरा हंस के मिले खसाम मेहर की बातें तो कहूँ जो मेहर को हो बेपार मेहर हक नियामत सब माफी मेहर मेहर को नहीं शुमार जो मेहर ठाड़ी रहे तो मेहर माफी जाए मेहर पल में बड़े कुट गुनी सो क्यों मेहर पाए
मेहर दिल अरस किया दिल मोमिन मेहर सागर हक मेहर ले बैठे दिल में देखो मोमिन मेहर का दर बात बड़ी है मेहर की हक के दिल का प्यार सो जाने दिल हक का या मेहर जाने मेहर को शुमार जो एक वचन कहूँ मेहर का ले मेहर समझियो सोहे अपार उमर अपार जुबाए मेहर को हिसाब न होए। निपट बड़ा सागराठ माए मेहर को नीके जाना जो मेहर होए तुझ ऊपर तो मेहर की होए पहचान सात सागर वर्णन किए सागराठ म बिना हिसाब ए मेहर को पार न आवई जो कई कोट करूं किताब मेहर मोमिन जान ही जिन ऊपर है मेहर ताको हक की मेहर बिना और देखे सब जेहर श्री मोहम्मद कहे मोमिनो ए मेहर बड़ा सागर सो मेहर हक कदम तले पियो अमीरस हक नजर मोहम्मद कहे मोमिनो ए मेहर बड़ा सागर सो मेहर हक कदम तले पियो अमीरस हक नजर पियो अमीरस हक नजर पियो अमीरस हक नजर। कृष्ण कन्हैया लाल को जय। सद्गुरु महाराज को तीनोंपुरी धाम को दुख रे प्यारो मेरे प्राण को सो में छोड़ो क्यों कर जाए जो मैं लिया है बुलाए इन अवसर दुख पाइए और कहाँ चाहियत है तोहे दुख बिना चरण कमल को सखी कब हो न मिलया कोए दुख ते विरहा उपजे विरहे प्रेम ईशक ईशक प्रेम जब आया तब नेहचे मिलिए हक दुनि के सुख दिए मैं तिनको जो कोई चाहे सुख जिन से मेरा पीऊ मिले मैं चाहूँ सोई दुख जिन से मेरा पीऊ मिले मैं चाहूँ सोई दुख दुख रे प्यारो मेरे प्राण को सच्चिदानंद गुरुदेव को। परम मंगलमय परात्पर पर अखिलेश अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण को चरण में प्रणाम कर दे मंचासीन श्रीमद् भागवत कथा वक्ता आचार्य रसिक जी महाराज एवं उपव्यास द्वय संगीतज्ञ आयोजक परिवार एवं टाड़ा नजीक बाट पालन होने संपूर्ण ग्रामवासी भक्तजन सुंदर साथ जी आज हमें छठों रात्रिकालीन महात्म्य व्याख्यान में उपस्थित छूँ। भोली दिवाकालीन सत्र में कार्यक्रम पूरा होने छा र आज हमें यो रात्रिकालीन कार्यक्रम को अंतिम व्याख्यान प्रस्तुत गर्दैछौँ। हामीले विचार गर्यौं जीवले साधना गर्नुपर्छ, साधना द्वारा प्रेम प्राप्त गर्नुपर्छ। साधना द्वारा प्राप्त गर्ने वस्तु के हो? कर्म, ज्ञान, उपासना
कर्म, उपासना, ज्ञान र भक्ति, भक्ति नै प्रेम हो। तो भक्ति लक्ष्य हो। भक्ति प्राप्त गर्नुपर्छ, प्रेम पाउनुपर्छ, त्यो लक्ष्य हो। भने त्यो प्रेमको साथमा अथवा साधनाको साथमा के रहन्छ भन्दा साधनाको सँगी दुःख हो। आज हामी दुःखको विषयमा विचार गर्छौं। जहिले सुखको विषयमा किन विचार गर्नु? दुःख पदार्थ के रहेछ त्यसमै थोरै विचार गरौँ। किनभने अध्यात्म यात्रामा निस्किएका हरेक साधकले जीवनमा सहर्ष दुःखलाई स्वीकार गरे। कसैलाई स्वाभाविक रूपमा दुःख मिल्यो, कोही महलमा जन्मिए, ऐश्वर्य प्राप्त गरे, तर त्यसलाई साथमा राख्न चाहेनन्। सुखलाई लात्तले दिएर दुःखलाई नै स्वीकार गरे। जीवको पहिलो समस्या यही हो कि ऊ सुख चाहिरहेछ। महापुरुषहरू भन्छन् दुःख बिना जागनी हुँदैन। दुःख रे प्यारो मेरे प्राण को, हे सखी हे साधो। मलाई मेरो प्रियतमबाट अलगिएको, प्रियतम भनेको ब्रह्म, जीवको अवस्था भनेको ब्रह्मबाट अलगिएको अवस्थामा तडपिएको जीवले भगवानसँग गरेको प्रार्थना हो यो दुःखको माग। मेरो आत्माको मालिक परमात्मा हो भन्ने थाहा भयो। संसारको कुनै पनि वस्तु अब मन पर्न छोड्यो। साधना फक्रिँदै गएपछि भगवानले सोध्नुभयो तिमी के चाहन्छौ, तिमीलाई म के दिउँ भनेर वरदान दिने बेलामा भक्तले, साधकले माग गर्यो मलाई त दुःख नै चाहियो। दुःख रे प्यारो मेरे प्राणको। परमात्माबाट अलगिएर जुन दुःख मलाई मिलेको छ त्यो दुःख नै मेरो प्राण बनेको छ। किनभने भगवत विरह रूपी दुःखले मलाई नित्य निरन्तर भगवानको, परमात्माको, श्री कृष्णको स्मरण गराइरहन्छ। सबै दुःखलाई छोड्न चाहन्छन्, कसैलाई पनि दुःख मन परेको छैन। सोमै छोडो क्यों कर जाए, मेरो प्रियतमको दुःख, दुःख हुँदा मलाई कृष्ण याद आउँछ। त्यस कारणले म दुःखलाई कसरी छोड्न सक्छु? म दुःखलाई छोड्नै सक्दिनँ। किनभने संसारको सुखमा त भगवानलाई बिर्सिहालिन्छ। सामान्य मान्छेले पनि दुःख पर्यो भने हे भगवान भन्छन्। कहिल्यै भगवान नसम्झिने पनि काहीँ लड्यो, ठोक्यो, ढिलो भयो, केही हरायो भनेदेखि उसले क्षणिक भए पनि भगवान, हे भगवान भुइँचालो आयो भनेदेखि त रात दिन भुइँचालो आइरह्यो भने के गर्ने रहेछ त मान्छेले? मोक्ष हुने रहेछ नि। कस्तो रमाइलो हुने रहेछ होइन? रात दिन विपद आयो भने। कोरोनाको बेला हेर्नु त धेरै मान्छे सात्विक भएका थिए। क्लाइमेटै चेन्ज भएको थियो त्यतिखेर, पर्यावरणै सफा भएको थियो, मान्छे सहयोगी भइसकेका थिए। आखिरी मरि नै रहेछ। जिन्दगी के रहेछ त आखिरी? त्यतिखेर आफू घरमा फलेको सजिना पैसा बेगरै छिमेकीलाई दिँदै थिए मान्छेले। थियो कि थिएन भन्नुहोस्? अब दिँदैनन्, फेरि बेच्न थालिहाले अहिले। हेर, दुःखले त सफा गर्दो रहेछ। मूर्ख मनुष्यहरू सुख चाहन्छन्, परमहंसहरू के चाहँदा रहेछन्? दुःख। कि दुःख त्यस्तो इन्डिकेटर हो कि जगत दुःख हो, जगत मिथ्या हो, जगत माया हो भन्ने कुरो दुःख पर्दा यो थाहा हुन्छ।
द्वन्द्व हो भने बेकार रहेछ भन्ने थाहा हुन्छ। के न हो भनेर ल्याएको चिज बिग्रियो भत्क्यो भने ए मिथ्या रहेछ भन्ने कुरो थाहा हुन्छ। त्यसमा मोह छ भने झगडा गर्छ, थोरै बुद्धि छ भने लाभ हुन्छ उसलाई। आखिर यो हुने नै यस्तै थियो, आखिर यसको इन्डिङ हुने नै यसरी नै हो। थोरै विवेक छ भनेदेखि ऊ सम्हालिन्छ। र महामती भन्नुहुन्छ म त दुःखलाई छोड्न सक्दिनँ, त्यसकारण जो मैं लिया है बुलाए, म त दुःखलाई बोलाउँछु। कुन्तीलाई पनि भगवानले सोध्नुभयो, कुन्ती साह्रै दुःख पायो जीवनभरि, वनवास बस्नु पर्यो, लाउन खानको पनि राम्रोसँग भएन, जीवनभरि शत्रु लागिरहे। भागवतमा कथा सुनिन्छ नि, भगवान आउनुभयो, राज्य मिलिसकेपछि अब के माग्छौ? सोन चाँदी हीरा मोती म तिनै लोकको जे पनि दिन सक्छु। सर्वसमर्थ भगवान अगाडि उभिनु भएको छ। कुन्ती माग्छिन् दुःख। विपद सन्तु न शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो, भवतो दर्शनम यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम। भगवान मेरा पाइला पाइलामा विपद आउन्, अप्ठ्याराहरू आउन्, कठिनाइहरू आउन्, मलाई दुःखै दुःख आओस् जीवनमा। किनभने मैले के महसुस गरेँ भने जतिखेर दुःख आउँछ त्यतिखेर म भित्रको भक्ति जाग्छ, म भित्रको आत्मविश्वास, म बलियो हुनुपर्छ भन्ने कुरो त्यतिखेर म सम्झिन्छु। दुःखले मान्छेलाई शक्ति प्रदान गर्छ। सुतिरहेको, ज्वरो आएको, सुतिरहेको मान्छे ङ्याङ गर्दै रुँदै खाजा पकाउन लाउँदै खाँदै गरेको मान्छे स्वाटै सर्प आयो भने उठेर फुत्तै भाग्छ, फुत्तै भाग्छ है। त्यो कोही थिएन खाजा दिने मान्छे, अघि मान्छे भेट्दा साह्रै थियो तर अप्ठ्यारो आइरहेको, फुत्तै भुइँचालो भुइँ हल्लिन थाल्यो भने बेडबाट जुरुकै उठेर कुदिहाल्छ। त्यो कहाँबाट शक्ति आउँछ, कहाँबाट शक्ति आउँछ? त्यो दुःखमा त्यो ताकत हुन्छ र त्यो शक्ति आध्यात्मिक शक्ति हो कि दुःखको अवस्थामा संसारको क्षणभङ्गुरता थाहा हुन्छ, सम्बन्धहरू थाहा हुन्छ। दुःखको अवस्थामा इष्टमित्र नाता गोता छरछिमेकीको परीक्षा हुन्छ। तपाईँले याद गर्नु भएको छ कि छैन? विपद पर्यो भने साथीभाइ चिनिन्छ। अस्ति तपाईँसँग प्रशस्त धन हुँदाको तपाईँको साथी, तपाईँ केही कारणले अलिकति लोनमा डुब्नुभयो, साथी अलिकति मलाई केही उपाय गर भन्नु, अनि उसले के गर्छ? विपदमा यथार्थ बाहिर आउँछ। कुरो बुझ्नुभयो? मित्रको परीक्षा हुन्छ आपतमा, अनि मित्र हो कि होइन भन्ने चिनियो। जगतमा कोही कसैको मित्र हुँदैन। हरेक अहङ्कार आफू बाँच्न खोज्छ। तपाईलाई यो मेरो लागि अत्यन्तै इम्पोर्टेन्ट, यो मेरो मान्छे हो भनेकै तपाईँको लागि चरम दुःखको कारण हुन्छ। तपाईलाई मानेको तपाईँको प्रेमी, तपाईँको प्रिय, तपाईँको साथी, तपाईँको बन्धु नै तपाईँको सबभन्दा ठुलो दुःखको कारण हो। चेक गर्नु होला, सबैलाई यो कुरो विश्वास नलाग्ला। पति पत्नीको परीक्षा हुन्छ दुःखमा, अप्ठ्यारो परेको बेला। दाजुभाइलाई चिनिन्छ हो। परिवारका सम्बन्धहरू, यथार्थहरू खुल्छन् दुःख पर्दा, अप्ठ्यारो पर्दा। केही अभियोग लागोस्, आघात परोस्, आफू एक्लै सहनु पर्ने होस्, त्यतिखेर गुहार मागौँ। कोही आउनेवाला छैन। महामती प्राणनाथजी भन्नुहुन्छ, कोही न किसी के संग सुख दुःख लेवे अपने अंग। कोही कसैको साथमा रहँदैन, भ्रान्ति हो। त्यसकारणले साधनाको पथमा निक्लिएको साधकले दुःखलाई स्वीकार गर्यो भनेदेखि जति दुःख आउँछ आऊ, आउँदै जाऊ। जति रोग व्याधि आउँछ आऊ। सन्त महापुरुषहरूलाई पनि रोग लाग्छ, ज्ञानी ध्यानी तपस्वीलाई पनि रोग लाग्छ। हेर्नुहोस्, किनभने रोग भनेको भौतिक कुरो हो,
ध्यान तपस्या भनेको आध्यात्मिक कुरो हो। हिजो पनि मैले भनेको छु यो कुरो। भक्ति गर्दा पूजा गर्दा रोग नलाग्ने भन्ने हुँदैन, लाग्छ। रोगहरू सामयोगिक हुन्, लाग्न पनि सक्छ नलाग्न पनि सक्छ। लाग्नु पनि ठुलो कुरो होइन, नलाग्नु पनि ठुलो कुरो होइन। शरीर संसार व्यवहार नित्य विनाशमा गइरहेकै हो। त्यस कारणले हरेक परिस्थितिलाई स्वीकार गर। सुखलाई भन्दा धेरै दुःखलाई प्रेम गर्यो भनेदेखि साधना सफल हुन्छ। नभए सुखमा बस्ने बानी भएको मान्छेलाई सानो दुःख दियो भने पनि त्यो मान्छे मानसिक रोगी बन्न सक्छ। अहिले प्रयोग गरेर हेरिएको छ, अहिलेको बच्चालाई ठुलो स्वरमा गाली गरिदियो भने पनि त्यो अलिकति ह्याङ हुन सक्छ, साइको हुन सक्छ। एक झापड लगाइदियो भने अहिलेको बच्चा बिरामी हुन्छ। किन? गाली गर्दै बिरामी हुन्छन् अहिले बच्चाहरू। किन भन्दा उसलाई धेरै सुख दिइयो। पहिला बच्चा रोयो भने उल्टै 5 झापड दिने चलन थियो कि थिएन? उल्टै 5 झापड दिएपछि चुप लाग्थ्यो। किनभने उसलाई थाहा थियो खाइन्छ दुःख भोगेरै आएको। सरले कुटे अरे भनेर स्कुलमा कम्प्लेन आयो भनेदेखि उल्टै बाउले कुट्ने चलन थियो। तैँले फटाइ गरिस् होला अनि सरले कुटे भन्नै हुँदैन थियो। कुटाइ खाएको कुरो भन्थ्यो कसैले? सरले भाटा हान्नुभयो भने। अहिले सरले ठुलो स्वरमा बोले भने बाउआमा लट्ठी लिएर स्कुल जान्छन्। त्यसले गर्दा त्यो बालकको मनोबल अझै सङ्कीर्ण हुन्छ। अनि कुनै ठुलो स्वरले कसैले बोलिदियो भने त्यो त्यहीँ साइको हुन थाल्छ। किन? कि दुःखै पाएन जीवनमा अलिकति पनि, हो कि होइन? एकदम चाकर गरेर खाजा खुवाएको बच्चाहरू कमजोर भइरहेछन् नि अहिले। हेर्नु त, छोडिदिएको बच्चाहरू लात्तले दिएर फ्याँकिदिएको, अब उठेर आफै आयो भने मात्रै त्यसले केही गर्छ। एकदम सुमसुम्याको सुमसुम्या एकदम गरेको त्यो जमारा राखेको र बारीमा छरेको मकै मिल्छ? एउटा रुख हुनको लागि त्यसले घाम पानी हुरी बतास सुख दुःख झेलेको हुनुपर्छ। त्यो कहिले शिशिर ऋतुमा पुरै नाङ्गिन्छ त्यो वृक्ष, सबै पात झरेको हुनुपर्छ। त्यसपछि उसले ग्रीष्म ऋतुको कठोर गर्मीलाई सहन गरेको हुनुपर्छ। अनि त्यसपछि तीव्र वर्षा कन्टिन्यू 2 महिनासम्म टाउकोमा पानी सहन गरेको हुनुपर्छ उसले। त्यसपछि त्यो वृक्ष बौरिएर हरियो टल्किने हरियो भएर आउँछ, हो कि होइन भन्नुहोस्? तर गमलामा राखेको बिरुवा त्यस्तो भएर आउँदैन। र जीवनमा दुःख खोजौँ। दुःख जतिसुकै दुःखलाई स्वीकार गर्ने शक्ति भइसकेपछि कसले के दुःख दिँदो रहेछ लु हेरौँ ल। लु दुःख दिएर देखाऊ। चन्द्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वाचक्षुमुखादजायत। ओम